Hello everyone. Let's start today's discussion. That's 9th February. So first topic that was in news. Editorial आया था on again. It was again on Myanmar issue. तो इसको हम देखेंगे फिर से एक बार Myanmar and what India can do. What is China's influence in this? Then second editorial was there on healthcare. So it is mainly regarding India's expenditure in healthcare and how it is lagging behind. जो बजट में हमने कहा है उससे हम पीछे कैसे चल रहे हैं उसके लिए है. Third part is news in short. And sorry today budget session नहीं हो पाया because of some issues. वो हो नहीं पाया था and even यहाँ पे भी आपको थोड़ा issue face करना होगा. ठीक है तो कोई नहीं कल तक हो जाएगा mostly tomorrow or day after tomorrow. So it's ready but the recording का time नहीं हो पा रहा है इसलिए थोड़ा issue आ रहा है. So first the long and the short of India's नई पई तव dilemma है ना. तो नई पई तव capital of Myanmar उससे है. तो म्यांमार को हम ऐसे कहते हैं जैसे इंडिया को न्यू दिल्ली कहते हैं सेम वे. सो टिल 1937 ये हम पहले भी देख चुके हैं. सो इन शॉर्ट इसको एक बार देख लेंगे हिस्ट्री ऑफ म्यांमार थोड़ा सा. Till 1937, Myanmar was formerly known as Burma. Also was part of British India. Britishers के अंडर था. In 1937, Britishers separated this from British India. तो इंडिया से उसको अलग कर दिया गया. And during World War II, it was under the control of Japanese. 42 से 44 तक it was under Japanese control. And after World War II, the nationalist movement वहाँ पे ग्रो हुई जैसे इंडिया में भी nationalist movement चल रही थी. And Myanmar got independence on 4th of January 1948. ठीक है यहाँ पे 4th of January 1948 को इनको इंडिपेंडेंस मिला था. देन 1948 में जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे इनका नाम था यू नू है ना. तो सारे नाम ऐसे ही है वहाँ पे ऑंग सैंग सू की है ना यू नू. तो ऐसे इज द यू नू. एंड सिंस इंडिपेंडेंस म्यांमार हैज फेस्ड लॉट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस लेड बाय द कम्युनिस्ट हु लैक्ड मेजॉरिटी इन द रूलिंग पार्टी. तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उनका मेजॉरिटी नहीं था बट इनकी वजह से काफी इश्यूज म्यांमार के सिस्टम में फेस करने पड़ते थे. इन 1962 द फर्स्ट मिलिट्री कूप दैट हैपेंड वाज बाय जनरल ने विन who abolished the federal system and nationalized the economy and socialist program party became the sole political party. तो वहां पे एक ही पार्टी बची SPP सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी. यही एक ही पार्टी बची और मिलिट्री का मेन वहां पे राज चलता था. मिलिट्री कंट्रोल करती थी. देन 8th of August 1988 है ना. तो ये हो गया 8888 रिवॉल्यूशन. तो ये 8888 रिवॉल्यूशन हुआ था. इट वाज अ प्रो डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन दैट हैपेंड इन म्यांमार एंड इट चैलेंज द रूलिंग ऑफ सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी. तो एसपीपी को इन्होंने चैलेंज किया एंड इट गेव राइज टू NLD दैट इज नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी. तो ये डेमोक्रेसी की बात करने वाली पार्टी बनी जिसकी हेड थी ऑंग सैंग सू की विच पेव द वे फॉर एंट्री ऑफ ऑंग सैंग सू की इन द पॉलिटिक्स है ना. नोबेल लॉरिएट भी थी. तो अभी देखेंगे इस 88 का अपराइजिंग होने के बाद इन द ईयर 89 मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड अगेन. मिलिट्री रूल फिर से वहां पे लगा दिया गया एंड ऑंग सैंग सू की वाज पुट अंडर हाउस अरेस्ट. उनको डिटेन कर दिया गया जैसे अभी किया गया है. And from 1989 to 2010, Aung San Suu Kyi was detained. In between, she came out, ठीक है, under some restriction. Then in 2010 पे यहाँ पे mainly democracy और Aung San Suu Kyi का influence काफी बढ़ गया था. So 2010 में there was national flag, national anthem were changed and long-awaited electoral reforms took place and there was formation of electoral commission also. तो इलेक्टोरल कमीशन बनाया गया बट स्टिल इन्फ्लुएंस ऑफ आर्मी वाज देयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन. आर्मी का इन्फ्लुएंस अभी भी था उसमें. तो इनका जो इलेक्टोरल रिफॉर्म किए गए यहाँ की जो हाउस बनाए गए तो वहां पे इवन देयर वाज रिजर्वेशन फॉर आर्मी आल्सो. वहां की जो मिलिट्री है उनके लिए रिजर्वेशन था 10% अराउंड शायद. सो दिस इज 2012 व्हेन बाय इलेक्शन टुक प्लेस. NLD कैंडिडेट स्वीप्ड द विक्ट्री एंड ऑंग सैंग सू की गॉट इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट. Then 2015 में again she was victorious, फिर से जीत गई. And 2015 से 2020 is considered as golden period for the Myanmar. In this they went towards prosperity of the country. तो यहाँ पे इनकी prosperity तो बढ़ रही थी. And in 2020 Aung San Suu Kyi's party again won the election in by 83% of the seats. Now यहाँ से problem start हुआ.
this military of that country says that ये जो 2020 के इलेक्शन हुए थे यहाँ पे फ्रॉड किया गया था इन मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड बिकॉज ऑफ विच अगेन ऑंग सैन सूकी की पार्टी चुन के आई है, ठीक है। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस कूप हैपेंड, तो इसकी वजह से म्यांमार तत्मदाव, वहां पे उनके आर्मी को क्या कहते हैं, तत्मदाव, सीज द पावर इन अ कूप अगेंस्ट ऑंग सैन सूकी, इनकी गवर्नमेंट, एंड सूकी को डिटेन कर दिया गया along with the other leaders of NLD, and the power is handed over to Ming On Liang. Ming On Liang जो वहां के मिलिट्री लीडर है अभी, मिलिट्री चीफ, and the state emergency is imposed for 1 year citing इलेक्शन फ्रॉड्स, इलेक्शन में जो फ्रॉड हुए वो रीजन देके वहां पे इमरजेंसी लगाई गई है, ठीक है। देन व्हाट इज देयर इन दिस एडिटोरियल, इस एडिटोरियल में क्या बात की गई है? सो दिस एडिटोरियल मेनली टॉक्स अबाउट चाइना, चाइना की बात करता है एंड इंडिया की बात करता है, व्हाट रोल कैन बी प्लेड बाय चाइना एंड व्हाट रोल कैन बी प्लेड बाय इंडिया इन दिस पर्टिकुलर इशू। सो firstly they talk about strong sections reactions by what is the situation of Myanmar, उसकी बात कर रहे पहले। so there are strong reactions against what military coup happened in Myanmar by and there is threat of sanctions by countries like USA and other western countries in the wake of recent coup that lead to unique realignments in Myanmar। तो ये unique political realignments क्या हुए हैं? so to rebuild the charisma of fallen messiah, those batting for Suki in the international community may have to cordon her government's past action against the Rohingya। तो हो क्या गया है? So on the one side we have this Aung San Suu Kyi, on the other hand we have this यहाँ की military। before this issue or before this you can say coup, इस coup से पहले क्या situation थी? Different countries were criticizing, mainly USA was criticizing। US क्या कर रहा था? Criticize करता था Aung San Suu Kyi को because of her policies regarding Rohingya people, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। रोहिंग्या को लेके इनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाता था, इवन सैंक्शंस लगाए गए थे, एंड दिस क्रिटिसिज्म लेड टू द सिचुएशन दैट ऑंग सैन सू की बिकेम मोर अलाइन्ड टुवर्ड्स चाइना, ठीक है। तो ये चाइना के पास जाने लगी। आफ्टर दैट ये हुआ कि यहाँ की जो मिलिट्री है वो फिर वेस्टर्न कंट्रीज के आसपास थोड़ा बहुत जाने लगी, या फिर चाइना के साथ उनका इतना अच्छा नहीं था। मिलिट्री इज नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न कंट्री बट दे आर नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप विद चाइना आल्सो, एंड ऑंग सैन सू की ने चाइना के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप शुरू करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ दिस हैपेंड, ये यहाँ से हट चुकी है, ये पावर में आ चुके हैं। नाउ चाइना इनके साथ हुआ करता था पहले, बट नाउ what is happening in the world that जो इनका criticism कर रहे थे, now they are saying, that is USA is saying that they want to have democracy again and they have to show that Aung San Suu Kyi is the face of democracy। Aung San Suu Kyi वहाँ पे democracy की face है, जिनका चाइना के साथ पहले अच्छा रिलेशन था। बट व्हाट इज चाइना? चाइना क्या करता है? चाइना अपनी साइड स्विच कर सकता है। सो नाउ चाइना, अगर इफ दिस सिचुएशन pertains or continues in Myanmar, China will have to change its side and it will not be difficult for China to have a good relationship with the military also because they are not democracy और इन सब चीजों में चाइना वैसे भी बिलीव नहीं करता है, तो इसलिए उनके लिए मुश्किल नहीं होगा कि वहां की मिलिट्री को भी सपोर्ट कर दे। बट इन दिस सिचुएशन देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दोज who will display Aung San Suu Kyi as messiah or as pro-democratic, and mainly India के लिए problem होगा because we will not be having good relationship with both military and Aung San Suu Kyi। Aung San Suu Kyi तो वैसे ही चाइना के पास जा रही थी और मिलिट्री के साथ हमारे, खैर we are having good relationship with the military, they help us in northeastern region, but openly supporting military coup that will be against India's interest, and openly supporting Aung San Suu Kyi that will also be against India's interest because फिर military cooperation नहीं करेगी in the northeastern region। So this issue or this difficult political situation is there right now in Myanmar। तो those who want to rebuild the fallen messiah Aung San Suu Kyi, इनको क्या करना होगा? इनके पुराने जो actions है against Rohingya people उन सबको भूलना होगा, और eventually what will happen in all this, the plight of helpless Rohingya people will be on the back seat and it will be conveniently forgotten।
ठीक है, तो इनके बारे में सब लोग इवेंचुअली भूल जाएंगे. देन रोल ऑफ चाइना, व्हाट कैन बी अ रोल ऑफ चाइना इन दिस? सो international community's sharp reaction will likely to force तत्मदाव टू टर्न टू चाइना. दैट मीन्स इनकी मिलिट्री को चाइना की तरफ जाने के लिए कह सकते हैं. एंड बीजिंग हैज रिसेंटली बीन कल्टिवेटिंग गुड रिलेशंस विद द ऑंग सैन सू की, एंड ऑंग सैन सू की वाज आल्सो इन इंटरेस्ट विद द चाइना बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज वेयर क्रिटिसाइजिंग हर. एंड नाउ पॉजिटिव फॉर चाइना, पॉजिटिव साइड क्या है चाइना के लिए? दैट डिसाइसिव वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन द मिलिट्री will get closer to China because different countries like USA, UK have already criticized this military coup. और अगर वो criticize करते हैं इस military coup को, that means automatically these military will have to go towards China. ठीक है. And for Beijing it is very simple because वैसे भी they don't believe in democracy, so they do not have this baggage of democratic norms or reforms in their mind. उनको कोई लेना देना नहीं है वहाँ की डेमोक्रेसी हो या ना हो. They will engage with the military of Myanmar and they will just have to rejig, है ना, थोड़ा उनको रिफॉर्म करने होंगे अपनी पॉलिसी में, and they can have a new scheme of things in Myanmar, so they can have a good relationship with again the Tatmadaw, that is army, which is traditionally not been ardent fan of Beijing, would have to change its tune. तो अब आर्मी को चेंज करना होगा. पहले चाइना के साथ उतना अच्छे रिलेशन नहीं थे, बट नाउ दे हैव टू गो और दे हैव टू हैव गुड रिलेशनशिप विद द चाइना बिकॉज अदर कंट्रीज आर क्रिटिसाइजिंग देम. बाकी कंट्रीज जो उन्हें क्रिटिसाइज कर रही है. इंडिया, until recently if you consider, New Delhi or India's policy in Myanmar was not shaped by difficult choice. हमारे लिए कोई difficult situation नहीं था because military and that democracy both were there and we were having good relationship with Aung San Suu Kyi. हमारा trade business अच्छा चलता था business के point of view से अगर देखें. On the other hand, their military was helping us in northeastern region of India. तो हमारे लिए कुछ issue नहीं था, दोनों के साथ भी हमारा सही चलता था. लेकिन एक अगर पावर में आ जाए तो there will be a problem for India. So this is there is a difficult choice between norms and interests. Norms and interest. Our interest is in northeastern region. वो इंटरेस्ट हैम्पर करने के लिए हमें वहां के नॉर्म्स को वायलेट करना होगा, दैट इज डेमोक्रेसी को वायलेट करना होगा. सो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन नॉर्म्स एंड इंटरेस्ट. Neither was Suki's political experiment without the faults, nor were the India's national interest hurt by the army. उन्होंने कभी इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट हर्ट नहीं किया, ना ही ऑंग सैन सू की ने हमारे लिए कुछ बुरा किया है. अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया है. इंडिया would find it now a difficult to openly support the जनता, that is army, or given the strong American stance on this. And while Aung San Suu Kyi is getting cozy with Beijing, it was the Myanmar's military that had been more circumspect with Delhi's plight of course. तो इसलिए हमारे लिए काफी ज्यादा confusion है. Now, if we see India's stand, what India is doing, so if we see the statement of Ministry of External Affairs, we have said that we believe that the rule of law and democratic process must be upheld, and we are monitoring the situation closely in Myanmar, and India is definitely in favor of restoring democracy. It's recently history में भी हम देखें तो हमने वहाँ पे democracy को ही support किया है, ठीक है. And Myanmar's military की अगर बात करें तो military of Myanmar have also played a helpful role for India or now New Delhi in the northeastern insurgencies and insurgents across the border. इनके लिए हमने help किया है उनकी military ने. Unless now what is the point कि इंडिया के लिए कब better होगा? When military of Myanmar itself decides to engage in the peace process. Because they want to have some good point. दुनिया में खुद की अच्छी इमेज अगर करना चाहते हैं, it is possible that Myanmar's military will say we will have good relationship with Rohingya people, या फिर उनको repatriate करेंगे to get some good points from America or Britain. तो military decide to engage in a peace process to get some brownie points and for itself by having Rohingya question is likely to push aside, and with this campaign against them continuing relentlessly, perhaps even more ferocity. तो अगर ये रोहिंग्या के अगेंस्ट भी कुछ नहीं करते, रोहिंग्या के लिए कुछ नहीं करते, देन डेमोक्रेसी की बात नहीं करती वहां की मिलिट्री, अगर डिक्टेटरशिप की बात कंटिन्यू होती तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया इन चूजिंग. सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हाट इंडिया शुड डू? फर्स्टली, whoever is there in power, we should have good relationship with that. Whether it is military or it is Aung San Suu Kyi, we should have good relationship.
सो ये पहला बोला गया है, वी शुड कंटिन्यू टू मेंटेन रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट दैट इज इन पावर इन म्यांमार and discreetly we should push for political reconciliation and democracy and in between जब ये सब कहानी चल रही है, ठीक है, वहां पे जो भी सिचुएशन चल रही है, we should work to focus more on improving the trade connectivity security links between the India and Myanmar. तो इन एरियाज पे काम कर लो, जब डेमोक्रेसी आएगी तब देखी जाएगी, मिलिट्री के साथ अच्छे रिलेशन चलाते रहो एंड वहां पे उनको बोलो मिलिट्री को कि यू शुड हैव डेमोक्रेसी. So this will help India and Myanmar both, and it will save or it will be good for India if Myanmar does not go towards China. नहीं तो श्रीलंका वाला ही situation फिर से आ जाएगा. And second is step in journey to universal healthcare. Universal healthcare की यहाँ पे बात कर रहे हैं. So inside the article what is there? This is mainly थोड़ा budget से related है. So about 20 years ago, they are comparing India's healthcare system with the Thailand's healthcare system. 20 years ago, Thailand have rolled out the universal health coverage for its population at per capita GDP similar to that India is having today. तो उन्होंने इंडिया का जितना पर कैपिटा अभी जीडीपी चल रहा है उतना ही जब उनका पर कैपिटा जीडीपी था, उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम स्टार्ट किया था. बट situation is different in India and situation is different in Thailand. Now Thailand started this because they were investing gradually but steadily in the public health infrastructure and manpower. तो कोई भी अगर हमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना है, वी शुड हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एट द बैक एंड. उसको सपोर्ट करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ऑलरेडी देयर इन म्यांमार बिकॉज दे वेर वर्किंग ऑन दिस इशू of investing gradually and steadily in the health infrastructure and health manpower. This means that alongside with the availability of funds, तो सिर्फ पैसे देने से काम नहीं होगा, there is also existed a robust institutional capacity to assimilate those funds. तो पैसे का यूज करने के लिए अच्छा सिस्टम हो, अच्छी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हो, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम हो, then only we can utilize this fund in appropriate way. So the situation is same that our per capita GDP is equal, but their healthcare system was improving since last 30 years. हमारा healthcare system का that is not the situation with India. We are having same per capita GDP, same even expenditure भी हम करते हैं on healthcare system, but their background जो उनका बना हुआ था, जो बेस उनका बना हुआ था, that base is missing in India. तो ये इस आर्टिकल का मेन थीम है. अब देखते हैं और क्या क्या बोला है. So for India, lesson of COVID-19 entails setting on forth the steady and incremental path to universal health coverage, not attempting to sudden and giant leap. तो अचानक से पैसा सिर्फ बढ़ा देने से ये नहीं होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर अच्छा हो जाएगा. We need to go gradually because it is very big country. Thailand तो फिर भी छोटी कंट्री थी. India is very big country and it is having lot of different population, rural, urban. और रूरल एरिया में प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम बनाना इज अनदर इशू. The importance is because enough evidences exist that weak fund absorbing capacities, particularly in the backward states, है ना. तो अगर आप बैकवर्ड स्टेट्स में कितना भी फंडिंग दे दो, उतना ज्यादा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा इन इंडिया. एट टाइम्स सच एज अनयूज्ड फंड्स हैव बीन द ट्यून ओवर द हाफ ऑफ द स्टेट्स पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर. तो ये काफी बड़ा इशू है इन इंडिया. Even we can see healthcare system of Kerala compared with the healthcare system of say Bihar और उड़ीसा और झारखंड, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, काफी ज्यादा differences are there. So if we talk about this year's budget, Ministry of Health and Family Welfare have allocated the budget of around 73,932 crore and which saw a 10.2% increase and a corpus of 64,000 were ओवर द 6 years. तो ये 64,180 करोड़ ओवर द 6 years यूज करने हैं अंडर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना. ठीक है, तो इसके बारे में हम फिर से बजट सेशन में देखेंगे. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना फॉर स्ट्रेंथनिंग हेल्थ इंस्टीट्यूशन एंड 13,100 करोड़ हैव बीन allocated फॉर फाइनेंस कमीशन ग्रांट. एज अ फाइनेंस कमीशन की ग्रांट भी कुछ मिली है इस पर्टिकुलर इशू के लिए.
while allocations still leave a lot of to be desired, these could be the first steps towards the journey of steadily building the sustainable universal health coverage through incremental strengthening of grassroots level institution and processes. तो फर्स्ट बेसिक चीज हमें क्या करनी होगी, ग्रासरूट लेवल इंस्टीट्यूशंस बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है फॉर इंडिया. यूनिवर्सल इंश्योरेंस, सो बजटरी एक्सपेंडिचर, बीईएस बजटरी एक्सपेंडिचर, बजट में कितना बोला गया है फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विच कवर्स 50 करोड़ पुअर इंडियंस, है ना, प्रधानमंत्री पीएमजेएवाई, या फिर इसको क्या बोलते हैं आयुष्मान भारत योजना. इसमें व्हाट वी आर गिविंग 5 लाख पर एनम पर फैमिली, है ना. हेल्थ इंश्योरेंस है 5 लाख रुपीज पर ईयर पर फैमिली, नॉट पर पर्सन, and stagnated at 6,400 crore for the current and the proceeding a couple of years. तो इसको हमने रोक दिया है, उतना ही रखा है. And so have actuals and revised estimate at around 50% of the budgeted expenditure, which should be a cause of concern. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारा जो बजटेड एक्सपेंडिचर है और जो रियलिटी है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस आर देयर, कि हमने बजट में कितना बोला, सच्चाई में कितना होता है. Large expenditure projection and time constraint involved in input-based strengthening of the public health care have inspired the shift to the insurance route for achieving universal health coverage. Because हमें क्यों health coverage देने की बात की गई, because our hospitals or private hospitals are there, but government hospitals are not equipped with the technology or with the infrastructure that is required to cater to our public. तो हमें प्राइवेट के पास जाना पड़ता है, एंड प्राइवेट में सरकार पैसा तो नहीं दे सकती, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, हेल्थ कवरेज का वे. सो देयर आर टू वेज. वन, यू शुड हैव अ गुड हेल्थ केयर सिस्टम, दैट मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के काफी अच्छे हो, दैट इज फर्स्ट हेल्पफुल थिंग. If you do not have hospitals, you can go second way around. You can give direct insurance to the people. तो चाहे आप प्राइवेट में जाओ चाहे गवर्नमेंट में जाओ, आपका खर्चा सरकार कर देगी. So this way we are following the second way, that we are shifting to health insurance. However, insurance does not provide a magic formula expanding healthcare with measly levels of public spending. तो जब तक आप गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तब तक इस इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं है. अवेलेबल एस्टिमेट्स हैव picked the cost to between 62,000 crore to 1,08,000 crore for the year 2021 if PMJY is to meet the stated commitments. 50 करोड़ इंडियंस को अगर कवर करना है तो 10 करोड़ फैमिलीज को कवर करने वाले हैं उसमें, ठीक है. Then making do with such paltry spending year after year would mean that scheme benefits are being spread too narrowly and too thin, implying the inability to afford enough protection against the catastrophic health expenses to the poor. तो ये एक अनदर इशू है. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज देयर ऑन हेल्थ केयर इन इंडिया, जो काफी हाई होता है. बियॉन्ड लो अलोकेशन, पुअर बजट रिलायबिलिटी मेरिट्स द अटेंशन. Another related issue is persistent and large discrepancies between official coverage figure and survey figure. For example, national sample survey. तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है कि एक्चुअली इन्होंने 50 करोड़ के बोला है, लेकिन क्या उतना हो रहा है. This indicates the official public health insurance coverage fails to translate into actual coverage on the ground. There is lot of discrepancy in this. This is particularly intriguing in the forward states such as Maharashtra, Gujarat, Karnataka, where state level public health insurance schemes have been operational for around a decade. तो वहां पे already state की health insurance scheme है, अब वहां पे और एक स्कीम लाने का क्या फायदा, ठीक है. तो एक तरीके से पैसा बर्बाद हो गया. Robust research into the implementational issues should also be responsible for such discrepancies, and addressing them is warranted. तो अलग अलग स्टेट की सरकार है, देयर एक्सपेंडिचर एंड देयर वे ऑफ वर्किंग ऑन द हेल्थ केयर, दिस इज बिग इशू और दिस क्रिएटेड द डिफरेंस. आई थिंक फ्यू डेज बैक वी हैड क्लास, और जब हमने डिस्कस भी किया था डिफरेंट स्टेट्स हाउ दे आर टैकलिंग, नॉर्थ स्टेट वर्सेस साउथ स्टेट, कोविड के बारे में हमने बात की थी. Lastly, high actual coverage should not be equated with the effective financial protection. For example, Andhra Pradesh has among the highest public health insurance coverage scores,
but still have a out of pocket spending share much above the national average. तो still वहां पे हेल्थ कवरेज देने से सिर्फ होगा नहीं, still expenditure is very high there. In contrast, हिमाचल प्रदेश with much lower health insurance coverage, ज्यादा इंश्योरेंस लोगों के पास है नहीं, 3.87%. नेशनल सैंपल सर्वे sees that has a lower out of pocket expenditure. तो वहां पे लेकिन हेल्थ केयर का खर्चा ज्यादा नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी है. प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम इज दैट मच रोबूस्ट. Among other things, this could be attributable to the much higher per capita public health spending. Himachal Pradesh more than twice that of Andhra Pradesh, which highlights the importance of government investment. ये मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश डबल का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है as compared to हिमाचल प्रदेश, but there is no use of this because they do not have public healthcare system. Whereas in Andhra Pradesh, public healthcare system बनाने में, primary healthcare hospitals, सरकारी hospitals बनाने में, Himachal Pradesh is going for double expenditure as compared to Andhra Pradesh, which is showing the result in Himachal Pradesh. Okay. Then comprehensive primary care, health and wellness center. What is required for comprehensive health care? Not only insurance, but हमें दूसरी किस चीज की जरूरत है? First and the most basic thing is health and wellness center should be there. 1,50,202 of them offering comprehensive range of primary healthcare services are to be operationalized. तो हमारा टारगेट क्या है? 1,50,000 होने चाहिए 202 by December 2022. Of this, 1,19,000 would be upgraded to sub health centers, and the remaining would be the primary healthcare centers and urban primary healthcare. Rural and urban area में होंगे. Initially, most states prioritize the primary healthcare center or urban primary healthcare center for upgradation over the sub health centers, since the former required fewer additional investments. तो इसमें क्या होता है? PHC प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, जहां पे क्या होता है, इफ यू वांट टू गो फॉर बेसिक थिंग्स लाइक कुछ अगर आपको लग जाती है या कुछ नॉर्मल टाइफाइड वगैरह हो जाता है, बुखार आती है, तो उसके लिए आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जा सकते हो. बट इफ यू आर फेसिंग मेजर डिसीज लाइक डेंगू अगर हो जाता है या आप कोविड पकड़ लो हो जाता है, तो फॉर दिस यू रिक्वायर सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम और सब सेंटर्स जो होते हैं वो चाहिए. एंड नेक्स्ट इज टर्शियरी, जो सरकारी हॉस्पिटल है लाइक एम्स, जहाँ पे आप कैंसर जैसी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हो. फॉर दैट यू रिक्वायर टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम. सो वी आर सेइंग दैट प्राइमरी और सेकेंडरी में ही हमें ज्यादा फोकस करना होगा टू इंश्योर हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ द पीपल. इनिशियली मोस्ट ऑफ द स्टेट प्रायोरिटाइज प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम. ठीक है, ये हमने देख लिया. देन till February, 2,58,155 health and wellness centers were operational, of which 34,000 were sub-health centers and 23,000 were primary healthcare centers. This means that the remaining 92,000 health and wellness centers are to be operationalized by December 2022. है ना? हमारा टारगेट कितना है? 92,000 हमें ऑपरेशनलाइज करने हैं by December 2022. And this offers a huge cost of projection. As per the early conservative estimates, turning sub health center into health and wellness center is 17.5 lakh. 17.5 लाख रुपए लगते हैं एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए, जो भी पहले का है उसको अपग्रेड करने के लिए. तो अगर हम देखें कि हमें कितने बनाने हैं, एंड नाउ विल सी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है. ठीक है, what is the government's expenditure on this? So the current allocation is 1900 crore, an increase of 300 crore from the previous year is paltry sum of in comparison. Since 2018-19, when the health and wellness centers initiative begin, allocation have not kept pace with the target. तो हर साल क्या किया? इस साल 50,000, अगले साल 70,000, उसके अगले साल 1 लाख बना देंगे, लेकिन पैसा उतना ही अलोकेट किया हर साल. तो this number or this target was not in line with the funding that was given, and the greater focus should be given on rural health and wellness centers would be warranted, because rural areas mein there is lack of these things. Now issue with the fund. If we continue the expansion of health and wellness centers without enough funding would mean that फुल रेंज ऑफ प्रॉमिस सर्विसेज जो जो एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मिलनी चाहिए
वो वहां पे नहीं मिलेगी, वो वहां पे नहीं मिलेगी। रेंडरिंग द मिशन टू बी मोर रीब्रांडिंग एक्सरसाइज। तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक छोटे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को बोल दिया जाएगा इट्स अ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लेकिन है क्या वहां पे, जो पहले था वही मिल रहा है। तो ये बस एक रीब्रांडिंग हो जाएगी कि चलो हमने इतने नाम के लिए सेंटर्स बना दिए, बट देयर विल बी नो यूज ऑफ दिस। सेकेंडली, underfunding would squander the opportunity for health and wellness center initiative to at least partially redress the traditional urban-rural dichotomy by bolstering curative primary care in rural areas। तो मेनली ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है जिसको खत्म करने की भी हम बात कर रहे थे इन दिस पर्टिकुलर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, वो भी नहीं हो पाएगा। देन दिस वाज देयर इन दिस आर्टिकल कि इसमें बहुत से ज्यादा उन्हें मॉडिफिकेशन और चेंजेस करने की जरूरत है, ऐसा बोला। एंड फंडिंग शुड बी इन अलाइन विद द टारगेट। दिस वाज द मेन पर्पस और दिस यू कैन से मेन थीम थी उस पर्टिकुलर आर्टिकल की। नाउ नेक्स्ट इज न्यूज इन शॉर्ट। इसमें फर्स्ट, उड़ीसा टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट इन बॉर्डर डिस्प्यूट विद आंध्र प्रदेश। तो दे आर हैविंग बॉर्डर डिस्प्यूट, बहुत पुराना, 50 साल पुराना कह सकते हो, है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट चाहिए। So Odisha has decided to file a case against Andhra Pradesh regarding ongoing panchayat polls. तो इनका जो border dispute था, in this Andhra Pradesh is conducting panchayat elections. So this it is regarding the conduct of panchayat election in 3 villages of Koraput district. Koraput district याद रखना, it is in Odisha. Is violation of the status quo जो उन्होंने maintain किया था in respect to border dispute. This dispute is around 6 decades old now. 60 साल हो चुके हैं। And the last general and assembly election had been conducted by Odisha in these 3 villages. तो last किसने करवाए थे, उड़ीसा ने करवाए थे। अब कौन करवा रहा है, आंध्र प्रदेश करवाने की बात कर रहा है in these 3 villages. That's a problem. Second, USA rejoins UNHRC. तो United Nation Human राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी को फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। इन्होंने बाहर क्यों हुए थे, मिस्टर ट्रम्प, है ना, मिस्टर ट्रम्प की वजह से, बिकॉज ही वाज सेइंग दैट यूएनएचआरसी क्रिटिसाइजेस इजराइल अलॉट, इजराइल को ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, इसलिए हम इससे बाहर हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिपीटेड क्रिटिसिज्म ऑफ Israel by the UNHRC, and US said that its withdrawal did nothing to encourage the meaningful change but instead created a vacuum of US leadership which countries with authoritarian agendas used to their advantage। तो हमारा ज्यादा नुकसान हुआ है, फायदा कुछ नहीं हुआ है। Rejoining the council was one of the Biden's promise during the election period, है ना, तो इनका ये कैंपेन था। Then bill to merge J&K cadre with the AGMUT cadre। तो दिस इज सिविल सर्विसेज में जो अलग अलग केडर्स अलोकेशन होते हैं उसमें ये चेंज किया गया है। दैट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग केडर होते हैं, लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, दीज आर केडर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर ऑल द यूनियन टेरिटरीज, सारे यूनियन टेरिटरीज के लिए, एंड फॉर दिस अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया देयर इज वन कॉमन केडर कॉल्ड एगमुट केडर, बिकॉज ये छोटे छोटे एरियाज है, सबको कंबाइन करके बना दिया गया है एगमुट केडर। एंड नाउ द बिल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया है। इन दिस दे आर सेइंग कि इन दिस एगमुट केडर वी विल ऐड जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। एंड द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी। एंड द बिल मर्जेस J&K केडर विद द एगमुट केडर फॉर IAS एंड IPS ऑफिसर्स। एगमुट क्या होता है पता चल गया। However, there are questions about the move as the government had said the J&K would be again made a state in future। तो जो कमिटमेंट की थी इनिशियली कि अभी हम इसको यूटी बना रहे हैं, फ्यूचर में विल गिव फुल स्टेटहुड अगेन, तो उस पे ये थोड़ा अगेंस्ट जा रहा है बिकॉज इनको हम यूटी के साथ मर्ज कर दे रहे हैं फॉर केडर अलोकेशन ऑल्सो। देन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट श्रीलंका क्लियर्स अ चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट barely 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंडिया। तो देखो, है ना, अभी हमने एक तो हमको निकाल दिया फ्रॉम दिस ECT प्रोजेक्ट, ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, और अब चाइना को अलाउ कर रहे हैं टू हैव अ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, ओनली सोलर एनर्जी या जो भी है ना, एनर्जी प्रोजेक्ट फ्रॉम 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंडिया। तो श्रीलंका हैज अप्रूव्ड चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट ऑन 3 आइलैंड्स ऑफ जाफना पेनिनसुला। रिमेंबर दिस एरिया, यहाँ पे ज्यादातर तमिलियंस भी रहते हैं, ठीक है, जो इंडियन और श्रीलंकन तमिलियंस है वो रहते हैं। कंपनी एज जॉइंट वेंचर बिटवीन सिनोसार एंड एटेक्विन। तो ये दो कंपनी का ये जॉइंट वेंचर है। एंड द आइलैंड्स व्हिच आर देयर नियर जाफना पेनिनसुला इज नैनातीवु, डेल्थ एंड नेंदुतीवु। तो और एक आइलैंड है जो डिस्प्यूटेड है, उसका नाम बताना है मुझे इन द कमेंट सेक्शन। दूसरा आप मुझे बताओगे UNHCR का हमने देखा था,
तो यूएनएचसीआर के हेड कौन है, यूएनएचसीआर का हेड ऑफिस कहाँ पे है एंड कब बना था, ये आपको दूसरा मुझे बताना है. Then these islands are 50 kilometer away from Tamil Nadu coast of India, and Sri Lanka has also recently decided to take India out of this ECT. तो इंडिया, जापान और श्रीलंका का ये इनिशिएटिव था, इससे हमें बाहर कर दिया गया है. So this was it for today. Write in the comment section जो भी आपकी क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर्स, एंड दीज आर द थिंग्स. यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम पे आपको सब्सक्राइब करना है पीपीटी के लिए, और फेसबुक पे और इंस्टा पे भी इसको देखते रहना है फॉर एनी अपडेट्स, है ना, अलग अलग चीजों के लिए जो भी आती है फ्रॉम क्लैट पॉसिबल. सो आई होप you enjoyed the session. Thank you, and budget session will be uploaded soon. Sorry for the delay that is happening in that budget session.